Namaskar, Sat Sri Akal, Adab, hello, data and skill explorers. Welcome to DivKlearner, a bit forward daily. Today we are going to explore formatting dates in inquiry. In this session, you will learn step by step how to format date, time, date time zone values. We'll also see how to apply custom formats and locale settings like US or India, because formatting ensures that your reports are not just correct but also user friendly and globally consistent. So before I move forward, I just want to tell you that हम इन सारी चीजों को हिंदी में भी करेंगे एक बार इंग्लिश में करने के बाद. So if you are new here, make sure to subscribe, and if you find this video useful, like it and share it with your colleagues and friends, because this could help someone else too. So let us move to Power Query, to the Power Query or to the Power BI desktop. So this is what we have created. We'll start with a sample table containing dates. So I'll just take it to the query part here, right? And I'll show you the query. So we started with the simple table. Then we kept on adding the custom columns. So this custom column has a date format as DD, MM, YY. Let me bring a notepad as well so that I can show you by copying each and every step that I've put in there. This is an applied step. And just to tell you that how I got it there, I'll talk about that. But at the moment, what we are trying to do is date to text, DDMMYYY. What we have done is if I click here, this is what I have placed in the custom column. This is the name of the custom column and this is the value. If you want to know more about custom column in the same series, I have another video of custom columns, right? Then in the second one, what I've done is I have put it in a different format, and that is where I'm bringing the year first, then month, and then date. In the previous one, it was DD, MM, YYY. So date, month, and year. Let's go to the next one. After this, if I go here, I have put in only the value as MM, triple M, and YYY. That's the reason you're able to see this value. I'll be showing you that example in the other page that I'll be working on as well, as in the visuals as well. So if you see here, that's the fourth custom column that I've created. And in this, what I've done is I have formatted it in the days. So it gives you the day, then it gives you the date, and then it gives you the month, the full name of the month, because I've written on M4 times. Then the next one is where we start with the time zone and we start adding the time zone there. So what I've done is, because I wanted to show the date in Hindi, so I have used this particular formula where I'm writing down date to text, and at the end what I'm putting is in the format that I require, right? And that is what I'm doing there. In the other one, I just kept it simple, but I just wanted to show you an example that we can format just not the date part, we can format the time part as well. So here I've written down HH, MM, SS. So hours, minutes, and second. And when I put in three Z's, it will tell me the zone. So it will show me the time zone where I am. I was trying to show it in the US format as well, but because I'm from India, and in the India we are not able to put in the time zone. So here I have tried putting the time zone in a different way, right? What I've done is I've subtracted the hours. The only problem that we have here is it is not taking care of the daytime saving. When there would be a daytime saving, we'll have to switch it, right? So here what I'm doing is I have put the date time zone to text, but before I put in the date time zone to text, what I'm doing is I'm converting the date time, sorry,
I am converting the date time into into the US time. That's the reason I'm putting a -8 there. And when I'm putting this thing, it will show you -8, the time zone that I put in. So I put in E and US there as well. So having done this, this is where I have worked everything on the M query, like the way that I've created this particular, this complete series. And I have just clicked on apply and I've got them here. So here, what I've done is the selected date is again coming from the same place, the calendar, where whenever I move, it is giving me the selected date. That's what you can see here. This is where I'm showing you the date in Hindi and it is showing you Guruvar 11 September, right? And then you're seeing the date in the DDMMYY format. You're seeing the date into YYMMDD format. You're seeing the date into triple M and 4 times Y format. Here is where you're seeing the day, Thursday, two dates for date and the month as September. This is where you're seeing the time zone of my current time. Here is where you're seeing it with the -8 time, -8 hours for the zone that I had to work on. Now remember, for formatting changes, the way your data is shown, not how it is stored. That's a key difference, right? So just remember that. अब इसी को हिंदी में समझते हैं, राइट? तो आज पावर क्वेरी में, अगर हम पावर क्वेरी में जाएं, तो हमने क्या किया? हमने टाइम, टाइम जोन, इन सारी चीजों से डिफरेंट फॉर्मेटिंग में काम किया है, राइट? तो मैं आपको दोबारा दिखाता हूं कि मैंने क्या करा। सबसे पहले मैंने ये एक नया एक कॉलम बनाया, जिस कॉलम के अंदर मैंने सबसे पहले कॉलम के अंदर लिखा कि मुझे डी डी एम एम वाई 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 के फॉर्मेट में मिले। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, अगर आप देख पा रहे हो, तो यहाँ पर आपको डेट डी डी एम एम वाई 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 के फॉर्मेट में मिल रही है। इन दी सेकेंड कॉलम वेयर आई सी हेयर, मैंने क्या किया? मैंने यहाँ पर बोला कि मुझे वाई 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 एम एम और डी डी फॉर्मेट में देना है। तुम पहले ईयर, फिर मंथ और फिर डेट। फिर अगर मैं तीसरे वाले को देखता हूं, तो यहाँ पे मैंने बोला कि आप मुझे मंथ के पहले 3 कैरेक्टर दे दो और मुझे ईयर पूरा दे दो। तो यहाँ पर आप देखोगे जैन 2023। फिर तीसरा मैंने कॉलम बनाया और तीसरे कॉलम में मैंने क्या बोला? मैंने चौथा बनाया, सॉरी, चौथे कॉलम में मैंने बोला कि मुझे पहले दे दो, फिर उसके बाद मुझे डेट दो और उसके बाद मुझे मंथ दो। तो इसने उसी फॉर्मेट में मुझे यहाँ पे वैल्यू दिखा दी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पे जाते हैं, इस वाले कॉलम पे, यहाँ पर मैंने बाकी सारी चीजें सेम करी, जिस फॉर्मेट में मुझे चाहिए था उस फॉर्मेट में लिखा, और साथ में मैंने क्या लिखा? HIIN, मतलब हिंदी इंडिया। तो हिंदी इंडिया की वजह से क्या आया कि यहाँ पर देखोगे तो आपको हिंदी में डेट दिख रही है, क्योंकि हमने ये वाला उसमें लोकल अप्लाई करा, राइट? अगर मैं इसके बाद जाता हूँ नेक्स्ट वाले के अंदर, मैंने टाइम जोन पे बात करी है। दिस इज अ सिंपल वन, क्योंकि मैं आपको सिर्फ इसमें ये दिखाना चाह रहा था कि आप इसके अंदर टाइम के साथ भी काम कर सकते हो, डेट टाइम के साथ भी काम कर सकते हो। तो आपके पास HHMMSS, मतलब आवर्स, घंटे, मिनट्स, मिनट्स और सेकंड, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर दिख रही है। इसके अलावा मैंने इसके आगे 3 बार Z लिखा है। ये Z जो है, ये मुझे दिखा रहा है मेरा टाइम जोन। अब मैं अगर अपने टाइम को यूएस में दिखाना चाहता हूँ, तो मेरे पास इसमें कोई और तरीका नहीं था दिखाने का, तो उसके लिए मैंने इसके अंदर से -8 कर दिया, ताकि मैं उस टाइम जोन पे जा सकूं। और मैंने उसको ये फॉर्मेट दे दिया कि मुझे ये सारी चीजों में आप दिखाओ। अब इसमें सिर्फ एक ही चीज है जो प्रॉब्लम होगी आपको, क्योंकि यूएस के अंदर डे टाइम सेविंग होता है। वो सर्दियों में अपने समय को 1 घंटा पीछे करते हैं, गर्मियों में अपने समय को 1 घंटा आगे करते हैं। तो उसको मैनेज करने के लिए इसमें कोई फैसिलिटी नहीं है अभी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने रिपोर्ट में क्या किया। तो मैं यहाँ से आपको रिपोर्ट में ले जाता हूँ, और रिपोर्ट के अंदर आप देखोगे कि मैंने यहाँ पर एक कैलेंडर बना रखा है, जिसमें मैं डेट सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये डेट मुझे वही दिखा रहा है, यहाँ पर इंग्लिश में, यहाँ पर हिंदी में। इसको दिखाने के लिए मैं यहाँ पर अगर आपको जाता हूँ, जहाँ पे मेरी वैल्यूज आ रही हैं, तो आप देखोगे कि मैंने एक एक कॉलम से वो वैल्यूज दिखाई हैं। तो यहाँ पर ये हिंदी वाले फॉर्मेट को दिखा रहा है,
यहाँ पर ये डेट डी डी एम एम वाई 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 फॉर्मेट में दिखा रहा है, यहाँ पे वाई 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 एम एम डी डी फॉर्मेट में दिखा रहा है डेट, देखोगे आप तो पहले ईयर आया, फिर मंथ आया, फिर डेट आई। ऐसे ही यहाँ पर मैंने बोला था कि मुझे मंथ का नाम दे दो, लेकिन पूरा नहीं छोटा, तो मैंने 3M लिस्ट लिखे थे और 2025 से वाई 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 से 2025 आ गया। ऐसे ही जब मैं यहाँ पे डेट मांग रहा हूँ तो मैंने बोला मुझे डे दे दो, तो उन्होंने ट्यूसडे दे दिया, डीडी दिया तो 2 बार डेट दे दिया और फिर सितंबर दे दिया। इसी तरह से डेट टाइम जोन के अंदर मेरे पास सबसे पहले मंथ है, फिर डेट है, फिर ईयर है, और फिर इसने आवर्स मिनट्स सेकंड और टाइम जोन दे दिया। इसी तरह से अगर आप नेक्स्ट वाला देखोगे तो उसमें एमएम है 9/01/2023 -8, क्योंकि यूएस का टाइम हमसे पीछे चलता है तो वहां पर अभी सुबह हो रही है, राइट। तो वो एक दिन हमसे पीछे रहेगा। अगर मैं अभी 11 डालता हूं तो वहां पर 10 तारीख हो रही है। अब अगर आप इसके अंदर और इसके अंदर देखोगे तो इसमें 2 दिन का फर्क पड़ रहा है, तो ये तो सही नहीं हो सकता है। हमने माइनस करे 8 घंटे तो 1 दिन का फर्क होगा, तो हमारे पास यहाँ पर 2 दिन का फर्क क्यों आ रहा है? तो इसको एक बार हम जाके यहाँ पे टेस्ट करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर ये 1 दिन कम ले रहा है, क्योंकि 12 बजे का टाइम है, उससे एक डेट पहले ली इसने। तो एक डेट पहले लेना तो ठीक है, पर अगर हम यहाँ पे देखें 11 और 10, ठीक है, 1 दिन पहले है, 1 दिन पहले इज फाइन, क्योंकि हमने -8 आवर्स करे और -8 का 12 से 8 घंटे माइनस करेंगे तो 1 दिन पहले ही आएगा। तो ये वही चक्कर है, ठीक है। तो ये मुझे आपको दिखाना था, बस बस एक बात याद रखिए, फॉर्मेटिंग सिर्फ दिखाने का तरीका बदलता है, डेटा के अंदर का टाइप नहीं, राइट। वो उसका डेटा टाइप नहीं बदलता। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि मैंने जितनी बार यहाँ पर कस्टम फंक्शन लगाया तो मैंने ओरिजिनल टेबल को कहीं चेंज नहीं करा, राइट। सो आई फील दैट आई वाज adding some value to your time, and I hope this is adding clarity to you। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये आपको क्लैरिटी दे रहा होगा, आप सही तरह से समझ रहे होंगे। Please like, share and subscribe the channel so that the knowledge reaches not only you but also others। लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नॉलेज आपके साथ साथ दूसरों तक भी पहुंचे। That's all for today, Data and Skill Explorers. You just moved one step forward in your learning journey। बस आज के वीडियो का सफर यहीं खत्म होता है, लेकिन याद रखिए, रेगुलर प्रैक्टिस ही आपको एक्सपर्ट बनाएगी। If you found this useful, don't forget to like, share and subscribe। I'm your skill and data explorer peer, DivKlearner, a bit forward daily। See you in the next video where we'll explore comparison and difference in the dates। Till then, tab tak, keep exploring, keep churning।